Hello, hello, hello. Good evening, everyone. Hello, namaskar. Everyone, Wednesday Live, ELM Live में आपका स्वागत है. I welcome all of you for this yet another Wednesday Live session, जहाँ पे हम लोग मार्केट की तो बात करते ही हैं, बट साथ साथ में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ टॉपिक पे चर्चा करते हैं. आज मैं थोड़ा सा नॉट सो कंफर्टेबल हूँ बिकॉज ऑफ माई थ्रोट. तो आज मार्केट का बहुत डीप चर्चा नहीं करेंगे. आज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा. मैंने अपने लाइफ के अर्ली डेज में एक बात रियलाइज कर ली थी कि अल्टीमेटली यहाँ से मुझे अगर करियर में ग्रो करना है तो मुझे अपना नेटवर्क इसको बिल्ड करना है. और देखिए मैं एक चार्ट फॉलो करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है वो. ये चार्ट बेसिकली मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसको मैं प्रॉपरली डिफाइंड कर रखा हूँ कि मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर में कौन कौन है. हर इन्फ्लुएंस लेयर के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है. तो या ये मेरा आइडिया पैड है, तो मैं इसको यूज करता हूँ अपने आइडियाज के लिए. ये देखिए, ये गोला दिख रहा है आपको. हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक बुक पढ़ी थी. काफी टाइम हो गया उस बुक को पढ़े. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में वो बात कर रही थी बुक. उसमें कहता है कि आप एक छोटा सा सेंट्रल पॉइंट है और आपके अराउंड में आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, विच इज बेसिकली योर स्पाउस, योर किड्स एंड अदर. देन उसके अराउंड में होती है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली मतलब अगर सपोज आपके खुद के भाई हैं या आपके पिताजी के भाई है और आप लोग जॉइंट फैमिली के स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं तो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है. फिर उसके बाद में आता है कम्युनिटी की. एक्सटेंडेड फैमिली के बियॉन्ड यू आर पार्ट ऑफ वेरियस कम्युनिटी. जैसे अगर मैं आई एम ग्रेजुएट हूँ तो मेरी आई एम की कम्युनिटी. अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी है. अगर मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो वो एक कम्युनिटी है. ये सब पार्ट ऑफ कम्युनिटी. एंड देन कम्स द सोसाइटी कि बियॉन्ड कम्युनिटी सोसाइटी में, विच इज नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मी, बट डेफिनेटली यू हैव अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. तो ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस चार्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है. इसको मैं फॉलो करता हूँ. इससे क्या होता है कि आप हर लेयर के लिए अपने roles, responsibilities, expectations, and what you can give to them and what you can take from them, उसको properly define कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के रूप में फेस टू फेस. तो फेस टू फेस में मैंने तकरीबन 196 फेस टू फेस रिकॉर्ड कर लिए और तकरीबन 160 170 नहीं 180 के करीब जो है वो एक्सपर्ट्स है जिनके साथ मैंने रिलेशनशिप बनाया, जिसके साथ मैंने दोस्ती की. अब ये फेस टू फेस अपने आप में एक कम्युनिटी है, तो मेरे लिए इट्स पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी. सो एक्सटेंडेड फैमिली के बियॉन्ड वाली कम्युनिटी वाला जो सर्कल है, वहां पर मैं फेस टू फेस को प्लेस करता हूँ. उससे क्या होता है कि अब ये फेस टू फेस मेरे इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू गिव समथिंग टू फेस टू फेस. सो द कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ फाइंडिंग द राइट people who can associate themselves with this community, and we as a community grow together. कम्युनिटी के दो एस्पेक्ट होता है ना, एक है कंट्रीब्यूटर और दूसरे होते हैं सीकर. तो हो गई. आप अपने इमीडिएट फैमिली में भी देखिए वैसा ही होगा कि कोई ना कोई कंट्रीब्यूटर होगा और कोई ना कोई सीकर होगा, बट सबकी बराबरी होती है. ऐसी नहीं है कि जो कंट्रीब्यूटर है उसी का रुतबा ज्यादा होगा. अच्छा इंसान वही होता है जो सबको बराबरी पे रखता है. तो फेस टू फेस के अंदर भी वैसे कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न, who want to excel in market, and there are a lot of people who want to empower everyone in the journey of their learning as well. तो फेस टू फेस एक कम्युनिटी बिल्डअप हुई, 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज और इतने सारे लोग इसके अंदर में जुड़े. तो दैट इज पार्ट ऑफ माई वर्किंग टुवर्ड्स अ कम्युनिटी. सिमिलरली मैं सीए हूँ तो सीए कम्युनिटी है मेरी. जब मैं मल्टीपल संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ तो वो भी मेरी एक कम्युनिटी है. सो व्हेन यू look at your circle of influence holistically, it leads to a huge long-term growth in your life. And when I'm talking about growth, I'm not talking about financial growth. Because मैंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, मैंने कहा था कि मेरे लिए फाइनेंशियल ग्रोथ तो है ही इम्पोर्टेंट, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए पीस रखना और मेरा समय का मेरे को एक
कीमत मिलना, एक सदुपयोग होना चाहिए समय का, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स विच वी हैव एज अ ह्यूमन बीइंग। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में अब थोड़ा चर्चा करते हैं मार्केट ओरिएंटेड, बिकॉज वी ऑल आर हियर इन मार्केट फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ मेकिंग मनी। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में आई हैव रियलाइज दैट बड़ा पैसा वही बनाता है जो जो अपनी कम्युनिटी को नर्चर करता है, जो किसी न किसी कम्युनिटी का पार्ट बनता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये रमेश दमानी जी ही इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी, एंड आई नो हैव अ ब्लेसिंग दैट उनसे मुलाकात होती है, कई बार उनसे मिलने जाता हूँ। वो बॉम्बे में उनका एक पेटेंट प्लेस है, इवनिंग में वो वहीं पर ही बैठते हैं, और उनके साथ कोर ग्रुप है उनका, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो वो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि इवनिंग में हफ्ते में 4 बार 5 बार मिलते ही हैं। And the more they meet, they share ideas with each other and they help each other learn and go to the next level. And you know what they have done. The kind of wealth creation that group itself has created in market is unbelievable. सो मोटा मोटी बात ही एक सिंपल सा है कि अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का चार्ट बनाओ। कभी अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, वहां पर आपको एक चार्ट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इन्फ्लुएंस को मैप करके एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी, क्रिटिकल कम्युनिटी। आई मीन ठीक है, एक दो लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे, बट दैट शुड ऑल्सो बी टेकन इन अ पॉजिटिव में। बट एक कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जिसका कॉमन गोल होना चाहिए कि मिलके हम लोगों को एक ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहा है। तो फेस टू फेस इज ऑल अबाउट दैट कम्युनिटी, और हम ही इसी कम्युनिटी को नर्चर करते जा रहे हैं बाय रिकॉर्डिंग मोर रेलेवेंट वीडियोस। फ्राइडे को एक बहुत अच्छा फेस टू फेस आने वाला है, सैटरडे को एक और रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ट्यूसडे को एक और रिकॉर्ड करने वाला हूँ। बहुत लोग मिलते जा रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग करके इस कम्युनिटी को बिल्ड करता जा रहा हूँ। यस, वन ऑफ द इनिशिएटिव इज ऑफ दिस कम्युनिटी बिल्डिंग इज टू मीट इन पर्सन। तो हम लोग जो फेस टू फेस इवेंट्स करते हैं, तो वी टिपिकली डू टू बिग इवेंट्स इन अ ईयर। वन इज इन इंडिया एंड वन आउटसाइड। तो लास्ट टाइम हमने बैंकॉक में किया था, उसके पहले गोवा में किया था, इस बार फिर हम लोग मार्च में गोवा में कर रहे हैं। इस बार मैंने एक यूनिक थीम डिजाइन किया है। थीम इज लर्न अ नेटवर्क। ओके, लर्न में मतलब कई ऐसे एक्सपर्ट्स आएंगे जो बहुत अच्छा आपको लर्निंग देंगे और आपको तैयार करेंगे। अर्न में लाइव ट्रेडिंग करके आपको अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। एंड नेटवर्क के अंदर में मेरे बहुत काफी फेस टू फेस फेवरेट लोग हैं जो आने वाले हैं, जो वहां पर रहेंगे, खुद तो सीखेंगे ही, साथ में और लोगों को ऑफलाइन बैठ के अगर उनसे सीखना हो तो अपना समय देंगे, क्योंकि समय सबसे कीमती है, और कोई अपना समय दे रहा है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। So today I'm there with some of these experts who will be there in Goa. They may not be teaching in podium, but वो offline बैठ के जिसको जो क्वेश्चंस होगा उसको आंसर करेंगे और आपको एक नेटवर्क का पार्ट बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट मी वेलकम माय फ्रेंड्स, part of the face to face community. Let me just add them. Yes, so we have Mr. Brahmachari, Asit is here, जय इज देयर, इफ्तिम इज देयर, दीपक इज देयर, एंड ज्योति जी। आज ज्योति जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि मैं कम बोलूंगी, तो हमको मौका मिल गया ज्योति जी को कम बोलते सुनने में भी। शी इज वेरी स्वीट। So welcome all of you, and I'm looking forward to meet all of you in Goa in the month of March. I hope you guys are also looking forward to it. Yes. यस So यस yes, yes, ज्योति जी की मैं आवाज निकली है नेटवर्क बस। She's मैं नेटवर्किंग को लेके एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। स्टार्ट मैं करूंगी क्योंकि लेडीज फर्स्ट है, आप इसमें रोक नहीं सकते हो मुझे। Not only ladies first, you are also senior in the group. अकेली मैंने कहीं सुना पढ़ा था, अकेली निकली थी, राही मिलते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सही बात है। दिस इज व्हाट इज नेटवर्किंग फॉर मी। आज वो कारवां इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि जहाँ जाती हूँ लोग मुझे पहचानने लगे हैं। Yes. मैं इस पे जस्ट एक अपनी बात फिर ऐड करता हूँ। सॉरी मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, बट लेट मी जस्ट ऐड दिस। तो कल हम लोग भुवनेश्वर में थे, मैं और असित, और कल थी शादी सुहासिस पानी की, पावर ऑफ स्टॉक, अमेजिंग ट्रेडर, ग्रेट ट्रेडर। तो उसकी शादी थी, एंड वी अराउंड आई थिंक 10, Asit, we were around 12 13 people. 12 13 people were there,
And हम लोग probably the only connect point for all of us was face to face and knowing Subhashish so well. So वो एक अब क्या है, बॉन्डिंग वैसी बन गई कि लोग अपने एक दूसरे को शादी में बुलाते हैं, अपने फैमिली फंक्शंस में बुलाते हैं, एंड ऑब्वियसली तकलीफ आराम में दोनों टाइम ही अवेलेबल होते हैं. This is what Indian value system and culture is all about, isn't it? Yes. Brahmachari ji, I want to talk to you about this because you are one of the highly experienced people, and I really respect you for your market analysis. So, how has been your journey in market, and how much networking has helped? If you want to name two, three people or one person, you would say Yes. that this person changed me, and I'm so happy that I met him through my networking initiative. Yes. Actually, when I started career in stock markets in '91, that time the assets boom is going on. That time one stock at that time Hyderabad Stock Exchange was very active. That time there were 165 members were there. Out of them, one Mr. Shashank Vaidya. He is also U.S. citizen and he also have some kind of ticket in NYSE. So he used to tell me that this is the way to invest, this is the way to analyze, this is the way to look at the balance sheets, this is the way to look at the charts, kind of thing. So that time, even the I am working in a regional newspaper. That time, we were the first to introduce the stock codes in the news page. So that time, Dalal Street used to supply the data in a 4 by 4 floppy disk. So then he came. One Mr. Araja came from Dalal Street, and he told me that please publish the graph of the Sensex that time. So, okay, Baba, we after publishing 1 month of graph, then okay, Baba, if we don't understand how the people who see that chart, how they understand, then I requested him to teach some techniques in that. Then he came one weekend and sit with me, and this is the line to draw. And that was the first time in '92. I still remember that '92 April. That time he used to draw a trend line on a DOS system. That time there is no Microsoft, so he used to, and even more, no mouse at also. So that time we need to connect the dots. And then one Mr. B. Prasanna, he was Andhra Bank's general manager in that time, the 95-96 period. And then he started Hmm. looking at the one I went to. I met him on a interview for an Andhra Bank story, and he is sitting and drawing some charts in the graph sheets. And then I realized that this is Hmm. something going to be learned now. And he said that this is the way to analyze, and this is the way to for a trader. That time trading was Monday to Friday is one settlement, so T plus 5. So if you buy on Monday, you can sell it on Friday. That is intraday now. What we are doing now. So then he said this is the way to learn the graphs and bar chart. And that time there is no candlesticks are not so popular that time. Then he used to have a bar charts, and then he said drawing the lines on that. So that's the way we network. In 2000 also there was no person teaching the technologies in Hyderabad or anywhere. I think there is no not much popular. That time these people are very uh, I can say they are my gurus also one way. They introduced me to charts. And then in 2006, 2005, I came to one person called sorry, my immediate boss Ram Prasad has introduced me books, a series of books on the internet, that is Martin Pink's technologies book. And then I read, and I there is something to learn this. So this is where networking, who those who are already in the market and those who are already practicing to them. If we used to, whether there is work or there is no work, I used to go to the Andhra Bank and sit with the general manager and learn some technique and come back, and this is the way to learn. And that time we used to write the technologies based report also in a specific chart and index chart. Even in 2004 and 2005, we used to have an analysis on the a regular column in a newspaper. So that way we learn. And after that, in 2015, Atma Association of Technical Market, I used to conduct regular sessions in Hyderabad every month. Second Saturday, I used to conduct. So that is a place where I network with the people, the enthusiasts and the mentors and everyone. I have networked in that time.
So in 2010 and 12, there is no technical analyst teaching in Hyderabad. I am the only person started the teaching and interacting with the people, interacting those are coming to the market. And I most of the at least 2,000 people I remember with their surnames also. Even today, even today also they are in my contact. That is where we network. They regularly message me what to do and how to act on this specific condition. So these kind of network always will help us to improve our skill set basically. Something the way in I think markets have changed a lot of frames, like before 95, after 95, and 2000 to 2015 is one area, and after 2020 is completely different scenario. So they basically we do the same business, but the platforms and the modus operandi will change over a period of time. We need to upgrade. Those upgrade comes only with the networking. I don't know many things now. I don't know many other things also. I wanted to learn even now. See, that's where we should approach the market. I strictly follow for investment one strategy, trading other strategy. But there are so many other things which I don't know also. That come from only the networking with the people, those who are in the market, those who are practicing seriously. So that is where place I think these kind of uh, conferences will help us to build the network and to learn something True, new things to the market. That is where I still true, I true. again I started conducting some face-to-face workshops, and then I'm going to interact with I think so new breed of traders here. uh, I think that's the way we can learn things. Yep. Sure, sure. So remember last time when we did Bangkok, there was a group which became a group in Bangkok when they were doing face to face together, and there are 10, 15 people who are actually trading together. So Hmm. they came to meet me in Calcutta, and they said that we became friend in Bangkok, and we are now since then we have been trading together, and it has been a great rewarding journey for us. So it was not just that learning in that conference which was relevant, but the friends which were made, lifetime friends. And in stock market there is a huge relevance of lifetime friends. Let me go to Jay and ask this question. Jay, in today's world of multiple e-networking platforms like Twitter and Telegram, etc., how much relevance is the physical networking? You have started a trading den in Chennai. So tell me, what's the logic of that trading den, and do you believe in physical networking more than virtual networking? Hi, hope you're all doing good. Nice to meet you all. So basically, the networking when it comes to trading, for me, something new I can learn, a different perspective. That's what I had seen from the networking part. Secondly, if someone do some mistakes, trading mistakes, everyone does. I mean, like no one can escape from a trading mistake. So when we connect with other people who had been in that mistake, who had done that mistake, so he would give a solution. Like this is the way Exactly. I came out of that. I came out of that thing, and moreover, he can pinpointly say this is the next step you will do. So when I see someone make a trading mistake, I can get the loop where the trading mistake will lead to. So during those networking session, what we do is we used to talk to the people who are committing the same mistake. Don't try to do that. So that is the main thing I had seen from these networking sessions. And second thing is the different perspective of seeing the market on different time frames. Actually, when we see a market, probably I will see a market for next 2 days, someone will see a market for next 2 weeks, someone will see a market for next 2 months actually. So when the time frame differs, the perception of market differs. At the end of the day, how we are going to manage the risk on our respective time frame. So where their stop loss would be, where their chance of making money, what kind of targets they are looking for. So whether they are going to looking for a momentum phase. So these
kind of things we able to get from each other when we meet. Other than that, there will be an option seller coming in. I, as an option buyer, I used to think where their strength is, because their strength is my weakness. And they used to ask me how you find a momentum before it happens. So when it is a mutual learning from each other, that's what I personally feel from the networking session. In trading, the networking can really make your knowledge go greater heights when you leave the ego. That point I need to add. Awesome. Awesome. You have actually summed up this relevance of networking in trading quite well. Deepak, you have worked earlier in a tech company. In fact, I don't know whether you are still working or not. Earlier, when I came to your place, no more. Okay, now you are a financially independent trader, full-time trader. Yes, yes, full Fantastic. time. So, how are you networking with peer group in market and learning and any new learning which you have gained from any one person you would like to talk about today? So, as you know, Vivek, I trade in stock futures majorly, stock in news, and stock with results or events. So around that also we did the face to face also the first time that we do. So what I do is I observe what is happening whenever there is a stock in news. So for that I do both Indian market tracking and also the US market tracking, because we are actually in a process of transitioning from our crazy market moves to more stable market moves which are happening in US market. So as you know that there is a uh, rumor of extended trading hours and all, so we are also moving toward that. So I keep a track of one YouTube channel which is their SMB Capital. So they keep a track of a similar style of stock trading, which is trading stock in news. So that gives a good perspective. Then I have a weakness, as in, because I trade mean reverting. So whenever there is a trend which comes about, let's say for example today there was a trend in many stocks. So my main objective is that I stay away, try to stay away whenever there is a trend, and identify that today is a trend in that stock, and don't get into a way of that stock. So for that, the easiest way is to interact with people who do the trend trading. जो ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, आप उनसे बात करो कि भाई आपके क्या मीन्स ऑफ वेज है कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये ट्रेंड है. सो जब जब वो फीचर्स आपको उस स्टॉक में दिखें तो यू स्टे आउट ऑफ दैट, कि भाई इसमें आज ट्रेंड है, इससे आप दूर रहो, डू नॉट एंटर, कि इसको मीन रिवर्ट करना ही है. जैसे फॉर एग्जांपल टुडे सीमेंस डिड अ वेरी वंडरफुल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. अगर आज उसमें आप मीन रिवर्टिंग कर रहे होते तो इट वुड हैव बैकफायर्ड. सिमिलरली Right. क्यूमिंस में कल आपने मीन रिवर्टिंग किया होता तो वुड हैव वर्कड, आज किया होता तो वुड हैव बैकफायर्ड. सो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो यू गेट टू नो अबाउट कि कब आपको क्या करना है. देन मेजर पार्ट तो हमेशा ये रहता ही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको क्या करना है. तो अगर आपको एक बार ये पता लग गया कि आपको क्या करना है, तो बस आपको मिल बांट के ये डिसाइड करना है कि कब आपको फिर क्या नहीं करना है. तो गलतियां हटा दो या मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लो अपनी को, तो वी गेट टू नो कि विच इज द पार्ट दैट वी नीड टू फोकस ऑन. तो इसमें द मेजर रोल और अ बिग रोल इज प्लेड बाय द नेटवर्क दैट यू हैव. क्योंकि देखो, आप ट्रेंड फॉलोवर से पूछ के आप ट्रेंड फॉलोइंग तो कल से स्टार्ट करने नहीं वाले हो कि भाई मैं मेन रिवर्टिंग हूँ बट मैं ट्रेंड फॉलो करूंगा कल से क्योंकि मेरा दोस्त ट्रेंड फॉलो करता है. बट आप उससे ये नगेट्स लेके आप ये तो जरूर कर सकते हो कि यार these things are matching with the trend following part, so let me not attempt the mean reverting on it. तो इतना एटलीस्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कन्वर्सेशंस. सो ये है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो नेटवर्किंग से ही आई थिंक इज द बेटर सोल्यूशन आउट ऑफ इट. सही है. वो कहावत है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, पर सबको साथ में रहना पड़ेगा. सब अलग अलग खड़ेंगे रहेंगे तो कैसे फिर कद्दू मिलेगा? हाँ. सही बात है. Actually, this the benefit of networking we have realized as part of our trading arcade. We have around 200 traders, but all of them don't sit in one place. So we have two offices in Calcutta.
And when people sit together, they discuss so many things. At times when your impulse is so high and you are Yes. doing a revenge trade, there is someone The who is other sitting beside you and will say that don't do it, relax, exactly. square up kar de. And those are the days when you want a support from someone कि कोई मुझे बस उसी समय रोक दे मेरे हाथ को कि ना Correct. नहीं करने दूंगा तेरे को. That's the power of great network and like-minded people. And as they say, you are average of five people around you. Now you have to decide who are those five people. It's you. Asit, tell me. Uh, we have heard your journey. We have seen how you have grown, and obviously your scale of operation in trading is very high, which gives extreme level of emotions going up and going down. We were discussing this yesterday also, that the stress level as a trader is high, and it has the potential of bringing in a lot of unwarranted disease also because of the high stress level. Now, is networking helping you in any way to combat the pressure of running high positions and under any kind of pressure in the market? First of all, good evening to everyone, and thank you, Vivek bhai, for the opportunity. I think it's always a pleasure to speak to you, be it Bhubaneswar or the online platform. I think पहला चीज ये है, if I may say, if I can take a step back, Hmm. when I started my trading journey, I did not know about Twitter. Now, I did not know कि इस type of platform है, यहाँ पे आके traders लोग बात करते हैं या share their Yeah. experience and everything. And I Hmm. honestly must say I was active in Twitter from 2017, I guess 17 or 18 maybe. Though I had an account, but I never knew कि traders लोग वहाँ पे आके बातचीत करते हैं and all those things. But इसी जब मैं जॉब छोड़ रहा था कॉर्पोरेट, आई वाज लिविंग द कॉर्पोरेट, आई फेल्ट कि आई एम गोइंग टू बी वेरी लोनली बिकॉज सारे लोग जैसे फुल टाइम जॉब में हैं, दे वुड नॉट हैव टाइम टू इंटरेक्ट. हम सैटरडे संडे मिलता है तो ऑब्वियसली दे विल हैव देयर ओन फैमिली लाइफ. Initial 6-8 months, 1 year, I felt that little bit of vacuum because I had a kind of close circuit group of people who I used to talk and they used to talk to me. Thanks to Twitter, I started finding out like-minded people, people doing the similar stuff or similar mentality. So this is because of the network in the different platform. You get to know, okay, A, you are not alone, and there are other people who are also kind of not doing maybe similar stuff or much better stuff. And you try to learn. I have learned quite a bit of stuff from the threads people have written. Nandi sir specifically, the kind of threads that he used to write, there are other people who used to write the threads. I used to really follow them and try to find out, okay, this is what somebody is putting his experience on the platform and you can grab. I think networking is one way to you observe everything like a sponge, right? Whatever that you can get in terms of knowledge, in terms of experiences and everything, because ट्रेडिंग में सब सीखने के लिए एक लाइफ टाइम तो बहुत ही कम है. आप 10-15 लाइफ टाइम के बाद भी थोड़ा कुछ Hmm. सीख पाएंगे उससे. मुझे ऐसा लगता है कि इट इज सो फास्ट. So it's a road Yeah. less traveled. So if somebody has already gone through certain experiences, it's better to kind of understand from that Any perspective, live. and finding out what to be done and what not to be done. So and going to various kind of conclaves or whatever, we try to find out, okay, fine, log aise aise trade kar rahe. Earlier, I don't remember, me at least had not gone to any conclave or anything. I started doing that from 2018, and I felt ki yes, there is a community. You may not have to agree with everyone's point of view, but that is still a point of view. And you can listen to it and find out कि okay, fine, ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं. So I would not say we need to get influenced, to be honest. I think कि सबके हमें सुनना चाहिए, सबसे मतलब बातचीत करके जानना चाहिए कि उनका point of view क्या है. But end of the day, you need to shape up your own trading DNA. We cannot really get influenced by somebody just because somebody is doing X. We need to follow X. We might fall into the trap because we do not Hmm. understand the psychological aspect and background and whatever. If somebody is very, let's say, conservative, and I say कि नहीं यार trading कर रहे हो तो you have to have all the intensity, I might be misleading that person. But at the same time, if the person is understanding, okay, why he is thinking like that or why he is doing like that, he would have different perspective, and that is all that matters. So मेरे हिसाब से and face to face, I've been to the Goa one, and the kind of interaction that we had with so many people who had come from different part of the country,
इट ऑलवेज, एंड आप ये चीज हमेशा देखोगे, whoever the trader is, doesn't matter क्या कौन किस प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे हैं, if people come and start asking कि आप ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो, we actually drop all the guards and you start talking कि ऐसे ऐसे मैं करता, you get involved because I think there is an invisible thread between all the traders कि हमें ये लोग समझते हैं, घर वाले नहीं समझेंगे, दोस्त यारी नहीं समझेंगे, जो एक्चुअल ट्रेडर्स है who have gone through that, struggle, the issues that we face, डिसिप्लिन में बीच बीच में खो देता हूँ, वी कैन एब्सोल्युटली बी शेमलेस एंड टॉक कि बॉस हाँ ये मेरा इश्यूज है, आप क्या करते हो इसके लिए। यही चीज हम बाहर जाके बोलने में शायद वो नहीं होता इतना, यू नॉट फील दैट कंफर्टेबल, and we also come out of that whole sociological stigma कि traders are gamblers, we all face that कि यार घर में तो यही बोलते हैं बट हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। अब सबका पैशन वही है कि हम मार्केट में एग्जिस्ट करें, सर्वाइव करें, थोड़ा कुछ पैसा बने एंड सीखते रहे, एंड what better way than to trying to find out who else is doing what, and finding that connect with the rest of the traders. So networking is important, but my only this thing is that कि we do not need to get swayed away कि जो भी बोलो आप उसको follow कर लो, you have to kind of personalize it, you have to find out, customize it, and then implement whatever somebody is kind of sharing his views or her views kind of thing. So सही है, yeah. सही है, सही है। सो हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सब मिलने वाले हैं मार्च में, एंड आई जस्ट वांट टू शो ऑल माय फेस टू फेस लर्नर्स कि हम लोग क्या करने वाले हैं मार्च में। सो हियर वी आर। सो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ilanmarkets.com/goa, आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। या इस वेबसाइट में अगर आप जाएंगे ilanmarkets/goa, वहाँ पे आपको नजर आएगा network. So these are the face-to-face guests who have shared their knowledge with us in face-to-face, and now they are happily coming over and sharing their further knowledge with us in as an offline exercise. So काफी जबरदस्त इवेंट प्लान किया है हम लोगों ने, लर्न, अर्न एंड नेटवर्क। सो जो भी मार्केट में एक सीरियस ओरिएंटेशन रखते हैं, someone who believes in this theory of inclusive growth in market and serious about market will definitely find time to come to Goa in March, and we all will spend good quality time together in learning as well as a bit of entertainment in the process. Thank you guys for being there tonight for the discussion, and I'm looking forward to you being there in March and learn a lot from you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jyoti ji. Please take care. We need you in March. Thank you. Thank you. Sure, sure, sure. Thank you. Thank you. Thank you. सो ये था, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चर्चा कर गया मैं आज, लेकिन आई थिंक कभी कभी ये सब बातें भी कर लेनी चाहिए। हर वक्त सीरियस मार्केट ओरिएंटेड चर्चा जरूरी नहीं होती है। ऑलरेडी इतनी बातें हो ही रही है मार्केट में, सब लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, बट ये मार्केट वाली ये जो नेटवर्क वाली बात है, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में बहुत पे करता है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि यार क्यों समय दूं, क्यों। जैसे कल मैं सुभाषिश की शादी में गया तो एक बार तो लगेगा ना कि क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, कौन सा मेरे नहीं जाने से शादी नहीं करेगा वो, बट नहीं, वहाँ पर एक जो माहौल बना था, जो एम्बियंस बना था, जो लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, बातचीत हुई, पता लगा नई चीज़ें, लोग क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया के कुछ स्टार्स थे, अनंत था, पुष्कर था, लॉट ऑफ पीपल वे देयर जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मार्केट के जो कुछ स्टार्स है, विशाल है, असित है, तो बैठते हैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक, तो उसका एक अपना नॉलेज का ग्रेविटी है। तो गोवा में भी यही होने वाला है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक बातचीत होंगी और उससे कुछ ना कुछ हम सीखेंगे और एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। सो जॉइन अस फॉर दिस अमेजिंग फेस टू फेस इवेंट। साल में 2 बार ही करते हैं, तो इसलिए मन करता है कि जितने लोग आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग सब मिलके एक अच्छा वाइब्रेंट कम्युनिटी बिल्ड कर सके। थैंक यू, बाय बाय, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू ज्वाइनिंग, एंड लिंक वीडियो के नीचे रहेगा। आई एम श्योर यू कैन टू जॉइन अस। थैंक यू, बाय।